Hello, friends. Hi, Veena. Good morning. Good morning. भाई हमारी दोस्ती तो कल रात से ही हो चुकी है. We have become like sort of best friends. So how are you doing, Zoe? Yeah, wonderful. Perfect day here. Yeah. पाक चीन दोस्ती. Oh, Singapore. What a breathtaking view. A new morning among these beautiful valleys. और जैसे जैसे मैं अपने सफर में आगे बढ़ती जा रही हूँ, मैं अपनी एडवेंचर बुक में नई से नई मेमोरीज ऐड करती जा रही हूँ. लिटरली दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजार दूँ. But I can't do that because I have to leave this place and go ahead to explore more. Right now I am at the height of 9,000 feet और ये है Eagle's Nest का terrace. So I'm here starting my morning, मगर यहाँ से मुझे आगे की जानिब बढ़ना है and my breakfast is ready. But आज जो मेरा breakfast है उसकी ख़ास बात ये है कि I'm not having today's breakfast alone. कल रात actually when I was just passing through the lobby, I met a personality. She is from a place which is closest to Pakistan's heart and that is China. और जब जोई से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि 5 दफ़ा आ चुकी हैं. So we get along really well. और मैंने उनको कहा कि please join me in the morning breakfast के ऊपर. So she's here with me and I have one more personality जो कि पाकिस्तान टूरिज्म को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं, Mr. Muhammad Ali. So they both gonna join me over the breakfast there. Come with me. Hello, friends. Hi, Veena. Good morning. Good morning. भाई हमारी दोस्ती तो कल रात से ही हो चुकी है. We have become like sort of best friends. But I wanted to share कि जो इनकी बातें हैं वो आपके साथ भी share करो. So I'm here right now. So how are you doing, Zoe? Yeah, wonderful. Perfect day here. Yeah. Thank you too for inviting me to have breakfast with you. Yeah, thank you that you gave me your time. Zoe not once, twice, 5 times to Pakistan. So what brought you here? Actually, I love Pakistan very much. The first time I came, it was 2005, and I came repeatedly, and it's already my 5th time. So Zoe, not once, twice, but 5 times. Why 5 times? Oh yeah, you know I love Pakistan. Actually, Pakistan is the first foreign country I've ever traveled to. So I came repeatedly, and it's already the 5th time. Yeah. So only this place, or have you just got a chance to visit other places? No, many places all over the Pakistan. You know, the first time I spent almost 1 month here. So I traveled all around Pakistan, from north to south. Yeah. So what is your most favorite place so far? Yeah, I have to say it's just here, just here, Eagle's Nest. Yeah, you see, it's the world standard view here. Yes. You can see from here, like the topest mountain on the earth. It's amazing, and we can have breakfast here. Is there any place else in the world you can enjoy this kind of What could be more beautiful than having breakfast here? Such a beautiful place. अच्छा हमारे साथ मोहम्मद अली साहब भी हैं. सर, the way you are promoting Pakistan tourism across the globe, मतलब looks like more like your passion. कुछ बताइए ना अपने passion के बारे में. मैम देखिए, पाकिस्तान जो है I've been to so far 86 countries. And to be honest with you, Pakistan is the only country which has huge potential in tourism. If we talk about adventure tourism, there are 14 mountains in the whole world which are above 8,000 meters or about 26,000 feet. Out of 14, we got 5 in Pakistan, including second highest mountain on earth, which is called Mount K2. K2 is called also Mountain of Mountaineers, 8,611 meters above sea level. और उसके अलावा आउटसाइड पोलर रीजन हमारे पास लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं. बल्तोरो ग्लेशियर 68 किलोमीटर लॉन्ग है. उसके अलावा ब्याफिस्पर ग्लेशियर, ये आप देख रही हैं, आपकी जो सामने वादी है, नगर की वादी, इसकी दूसरी तरफ बल्तिस्तान की वादी है. तो मशहूर ट्रैक वहाँ बल्तिस्तान से शुरू होता है, शिगर से होते हुए ऑल द वे टू ये आपके सामने हिस्पर वैली यहाँ तक आता है. उसके अलावा हम कल्चर टूर्स में बात करें तो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मकामात हैं, ख़ास तौर पे मोहनजोदाड़ो,
जो कि 5000 साल कदीम है। और उससे भी अगर थोड़ा सा पहले जाएं तो मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन जो है वो 7000 साल कदीम है। उसके अलावा अगर आप आ जाएं फर्दर डाउन हड़प्पा की तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास 10,000 साल कदीम हड़प्पा की जो हमारे पास जो म्यूज़ियम और बाकी जो हड़प्पा वैली की सिविलाइजेशन है। अगर आप मुल्तान में जाएं तो जो हमारे पास सूफी श्राइन्स हैं। फर्दर डाउन आप जाएं अपना बहावलपुर में, जो वहाँ पे फोर्ट्स हैं हमारे पास, दिरावर फोर्ट जो कि बहुत मशहूर है, जहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है, बॉन फायर के इवेंट्स किए जा सकते हैं। मशहूर कार रैली भी वहाँ पे होती है जिसको चोलिस्तान डेजर्ट रैली कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके अलावा अगर आप फर्दर नीचे जाएं तो सिंध के अंदर जो रानी कोट का फोर्ट है, विच इज इक्वल टू एक फोटोकॉपी है, यानी दीवार चीन की। तो जो पाकिस्तानी हजरात जो अफोर्ड नहीं कर सकते बीजिंग में जाके दुनिया का जो अजूबा है दीवार चीन जाना, वो रानी कोट फोर्ट जाके उसको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इक्वल टू दीवार चीन है। सर, यू आर डेफिनेटली वेरी वेरी पैशनेट अबाउट टूरिज्म एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस कि ये जो शोला है ये इग्नाइट कैसे हुआ था। बट बिफोर दैट, ज़ोई, since you have been here 5 times, so would you like to tell us about your activities, that what you have been just doing during these, visits and stay over here? Pakistan doesn't only have like a landscape sightseeing like this. Pakistan enjoys, like what Ali had mentioned, had rich culture, civilization here. Yes, and the Indus civilization is here. It's not in India. And the Buddhist statue, Buddhist art is originated from here. And Ali mentioned, here we are, the best view in the world. So after I traveled this 5 times, I think I will travel to here more and more. Yeah, there's still lots of places to explore in Pakistan. And actually, I want to bring lots of my friends to see here. The best thing above all in Pakistan is not the view, not the culture. Actually, it's the people here. As a Chinese, you know how much like welcome, hospitality I can receive while I was here. Every time people ask you where are you from, they might thought I'm from Korea, South Korea, like Japan or Vietnam. Whenever I said I'm from China, was proud, and they treat me like sisters. Because there are so many examples of our friendship and our love towards each other. Yes. And obviously it's very very precious. So I'm sure like it's most likely naturally that you're gonna get warm welcome here. Thank you, sir. Thank you for your time. And Zoe, thank you so much. And since we are friends, we have shared the numbers. We're gonna stay in touch. And in the end, I would like to say that Pak Chin Dosti. Oh, Zindabad.